Hello and welcome to yet another tip and trick video of learning science with Shrishti. So in our today's video we are going to discuss the mnemonics or the tricks to learn the F block element of the periodic table. This is going to be our last video of this periodic table tricks. Okay, so before moving further on to the tips or the mnemonics, let us first of all know that what are the F block elements. So you can clearly see in this image that those elements or the period 6 and the 7 elements which are excluded from the main periodic table and are given down below in the periodic table, these two series are known as the F block elements. And the F block element are further divided into two parts, that is the lanthanoids and the actinoids. And why are they called the lanthanoids and the actinoids? Because the period 6 element of the F block element starts with the element lanthanum, that is why the name lanthanoid. And the period 7 element of F block starts with the element actinium, that is why the name is actinoid. So there are 14 elements in the F block elements of each period, that is the period 6 has 14 elements as well as the period 7 has 14 elements, and it begins with lanthanum and actinium, which are excluded out from the main periodic table and given out there below in the periodic table. Okay, now let us move on to the tip or the trick to learn the periodic table F block element. So let us begin with the lanthanoid first. So we are going to learn the elements of lanthanoid in three parts, that is part 1, part 2 and part 3. ऐसा कोई डिवीजन तो periodic table में दिया नहीं हुआ है, but we are going to learn this in parts ताकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा simplified और easy हो जाए. So part 1 of this lanthanoid includes the element of atomic number 58 to 62. Part 2 will include the elements of atomic number 63 to 67, and ultimately the part 3 will include the elements of atomic number 68 to 71. So without any further delay, let's begin with the part 1 of lanthanoids, that is the elements of atomic number 58 to 62. So let us see what elements are there. So the elements are cerium, praseodymium, neodymium, promethium and samarium. What are the elements? Cerium, praseodymium, neodymium, promethium and samarium. So what is the mnemonic for this part? The mnemonic is सेलिना और प्रीति ने पम्मी और सिमी को मारा. सो सेलिना एंड प्रीति एक फ्रेंड का ग्रुप है एंड पम्मी और सिमी एक फ्रेंड का ग्रुप है. सो सेलिना और प्रीति ने मिलकर पम्मी और सिमी को क्या किया? मारा. सो सेलिना का CE इज फॉर सीरियम, प्रीति का PR इज फॉर प्रेशियोडाइमियम, ने का NE इज फॉर नियोडाइमियम, पम्मी का PA इज फॉर प्रोमेथियम एंड सिमी का S इज फॉर सेमेरियम. ओके, सो सेलिना और प्रीति ने पम्मी और सिमी को मारा. दैट इज CE फॉर सीरियम, PR for praseodymium, NE for neodymium, P for promethium and S for samarium. Okay, now let us move on to the part 2 of lanthanoid, that is the elements of atomic number 63 to 67. So let us see कि elements क्या क्या हैं इस part में. So the elements are europium, gadolinium, terbium, dysprosium and holmium. What are the elements? Europium, gadolinium, terbium, dysprosium and holmium. So what is the trick for this? Trick is यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज़ हो गया. क्या हो गया? यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज़ हो गया. सो पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यूरोप तो यूरोपियम. सो यूरोप का EU इज़ फॉर यूरोपियम, गया का G इज़ फॉर गैडोलिनियम, टीबी का TB इज़ फॉर टर्बियम, डायबिटीज़ का D इज़ फॉर डिस्पोशियम एंड हो गया का HO इज़ फॉर हॉल्मियम. सो क्या है? यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज़ हो गया. सो EU फॉर यूरोपियम, G for gadolinium, TB for terbium, diabetes का D is for dysprosium and HO का HO is for holmium. Okay, now let us move on to the tip for part 3 of lanthanoid, that is the elements of atomic number 68 to 71. So let us first of all see कि क्या क्या elements है इसमें part 3 में. So the elements are erbium, thulium, ytterbium and lutetium. What are the elements? Elements are erbium, thulium, ytterbium and lutetium. Okay, so the trick is ए रे देख टमाटर येलो और ब्लू है. सो एक इंसान दूसरे को बोला है कि ए रे देख टमाटर जो है येलो और ब्लू है. ओके, सो ए रे का ER इज़ फॉर अर्बियम, टमाटर का T इज़ फॉर थूलियम, येलो का Y इज़ फॉर वाइटरबियम एंड ब्लू का LU इज़ फॉर ल्यूटेटियम. ब्लू का LU इज़ फॉर ल्यूटेटियम. सो ए रे देख टमाटर जो है वो येलो और ब्लू है. ओके, सो E फॉर अर्बियम, T फॉर थूलियम, Y फॉर वाइटरबियम एंड LU इज़ फॉर ल्यूटेटियम. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैंथनॉइड्स पार्ट. नाउ हम एक्टिनॉइड्स का देखते हैं. एक्टिनॉइड्स भी हम जो है वो 3 पार्ट्स में लर्न करेंगे. सो द पार्ट 1 विल इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ अटोमिक नंबर
90 to 93. Part 2 will include the elements of atomic number 94 to 97, and part 3 will ultimately include the elements of atomic number 98 to 103. So let us move on to the mnemonics or the trick for the 3 parts of actinoids. Okay, so the first part of actinoid में क्या क्या elements है? So the elements are thorium, protactinium, uranium and neptunium. What are the elements? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपट्यूनियम. ट्रिक क्या है इसके लिए? तो ट्रिक है थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम. थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम. सो थक गए का TH इज फॉर थोरियम, पागल का PA इज फॉर प्रोटेक्टिनियम, उधर का U इज फॉर यूरेनियम, नो का N इज फॉर नेपट्यूनियम. नो का N इज फॉर नेपट्यूनियम. ओके, सो थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम. सो TH फॉर थोरियम, PA is for protactinium, U for uranium and no का N is for neptunium. Okay. Now let us move on to the part 2 of actinoid, that is the elements of atomic number 94 to 97. So इसमें क्या है? Elements क्या क्या आ रहे हैं इसमें? So the elements are plutonium, americium, curium and berkelium. What are the elements? Plutonium, americium, curium and berkelium. Okay. So इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि पुराने आम कम बिकेंगे. ऑब्वियसली जो पुराने आम होते हैं, पुरानी कोई भी चीज़ होती है तो इंसान उसको क्या करता है? कम खरीदता है ना. तो पुराने आम क्या है? कम बिकेंगे. सो पुराने का PU इज़ फॉर प्लूटोनियम, आम का A इज़ फॉर अमेरिकियम, कम का C इज़ फॉर क्यूरियम एंड बिकेंगे का B इज़ फॉर बर्कीलियम. ओके, सो पुराने आम कम बिकेंगे. PU फॉर प्लूटोनियम, A फॉर अमेरिकियम, C फॉर क्यूरियम एंड B फॉर बर्कीलियम. Now let us move on to the last part, that is the part 3 of actinoids. So the part 3 is elements of atomic number 98 to 103. So part 3 में actually 2 सेंटेंस आ रहा है, बिकॉज एक सेंटेंस में सारे एलिमेंट्स को पुट ऑन करना वॉज नॉट ईजी. सो हमने इसमें 2 सेंटेंस लिख दिया है. दैट इज फर्स्ट सेंटेंस इज आइंस्टाइन वेंट टू कैलिफोर्निया. इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है कि कैलिफोर्निया वाला जो पार्ट है वो पहले आएगा, यानी कि जो कैलिफोर्निया जो जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पहले आएगा देन द आइंस्टाइन वाला पार्ट. ओके, सो आइंस्टाइन का EI is for Einsteinium and California का CA is for Californium. ओके, इजी, क्योंकि आइंस्टीन है और कैलिफोर्निया है, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स क्या क्या है. कैलिफोर्नियम एंड एंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम एंड एंस्टीनियम. ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, यानी कि एक लड़के के रिश्ते के लिए बात चल रही है. सो क्या बोला जा रहा है कि इतनी फैमिली आमदनी में तो कोई भी लड़की राजी नहीं होगी, बिकॉज पैसा क्या है उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा कम है, कोई स्टेटस नहीं है. सो दे आर सेइंग कि इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी. तो फैमिली का F इज़ फॉर फॉर्मियम, आमदनी का MD इज़ फॉर मेंडलीवियम, नो का NO इज़ फॉर नोबिलियम एंड लड़की का LA इज़ फॉर लोरेनियम. क्या है? लोरेनियम. ओके, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? फॉर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेनियम. क्या है? फॉर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेंशियम. ओके, सो F फॉर फॉर्मियम, MD for mendelevium, no का NO is for nobelium and L is for laurentium. Okay, so this was the all tricks or the mnemonics to learn the F block element of the periodic table. मैंने बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए भी लाइक S block, P block, D block सब के लिए मैं टिप्स और mnemonics जो है वो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी. अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड वॉच इट आउट फॉर मोर क्लैरिटी. एंड अगर आप सबके टाइम को सम अप करके देखो तो सारा जो है पूरा पीरियोडिक टेबल आप विद इन हाफ एन आवर जो है वो ईजिली लर्न कर सकते हो. सो हाफ एन आवर में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो आपकी एक इशू जो है बोर्ड की वो तो कम हो गई कि आपको अब पीरियोडिक टेबल जो है वो याद, मतलब ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा मैनुअली. आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा और आप कोई भी चीज़ जो है वो ईजिली कर पाओगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे. तो ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आता हो. अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.